In several developing countries, fired clay bricks were the prevalent building materials and are still produced through traditional technologies and practices. Though some of these practices have adverse impacts on the environment. In India, innovations like zigzag technology has reduced the amount of pollution that the brick kiln industry used to generate. The bricks are stacked in such a manner to guide the airflow in a zigzag path. It increases the airflow path and turbulence in the air, resulting in improved combustion and heat transfer rate and uniform temperature across the kiln cross-section. The main advantages of zigzag technology leads to a reduced energy consumption and reduced pollutant emissions, which is close to 30%. हम पहले पारंपरिक रूप से चलने वाले भट्टे जो एक ओवल शेप में बना करते थे, उसी तरीके से व्यवसाय को चलाते थे। पिछले 2 वर्षों में इस भट्टा उद्योग के व्यवसाय में एक आश्चर्यजनक रूप से औद्योगिक क्रांति आई है। उसी के चलते हुए प्रदूषण विभाग द्वारा जो नई नई पाबंदियां भट्टा उद्योग पर लगाई गई, उसी के तहत जिगजैग हाइड्राफ्ट टेक्नोलॉजी के आधारित भट्टों का निर्माण हुआ है। प्रत्येक भट्टे में लगभग 50 से 60 लाख रुपए के लागत लगाकर भट्टों का निर्माण किया गया है। उससे प्रदूषण निश्चित तौर पे हाफ हो गया है। जितना प्रदूषण पहले होता था, उससे लगभग आधा प्रदूषण आज की तारीख में भट्टों के द्वारा होता है। From clay preparation to molding to unloading the kiln, brick kiln industry is the biggest job provider in MSME sector. With India switching to zigzag technology in 2017, it has generated tremendous interest from the industry. There are twofold financial benefits. Firstly, through savings from reduced fuel consumption, and secondly, by increasing in revenue due to higher percentage of the highest quality product, making it a financially attractive proposition. Tapush Bhattacharya's report, TD India.